क्लाइमेट का रोजाना का वेदर होता है वो हीट हो मींस के वार्म हो चाहे कोल्ड वेदर डे टू डे condition of weather, it's the weather condition, right, of heat, cold, humidity, cloudiness, जिस तरह बादल आ गए या खुश्क वेदर है या रेन है उसको हम क्या कहते हैं व्हाट इज क्लाइमेट वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई भी वेदर जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ आवर कंट्री हियर इन पाकिस्तान अगर हम अपनी पाकिस्तान की नॉर्दर्न एरियाज की बात करें वहां पे इस तरह की जगहें हैं इस तरह की प्लेसेस हैं जहां पे वेदर जो है वो थ्रू आउट द ईयर या लॉन्ग पीरियड रहता है ठीक है तो जहां पे लॉन्ग पीरियड के लिए वेदर कोल्ड रहे या एक ही जैसा रहे उसको हम क्या कहते हैं क्लाइमेट वी कॉल इट क्लाइमेट ठीक है नाउ वेदर इज डे टू डे कंडीशन and the climate is the weather condition ho gaya now the effects of climate next slide please teacher Amna next slide please thank you okay look here in the slide a place close to the north pole or the south pole is very cold throughout the year जो जगह नॉर्थ पोल या साउथ पोल के करीब होती है वो हमेशा क्या होती है कोल्ड होती है यानी कि वो एरिया होता है वहां पे ठंड स्लाइड प्लीज नेक्स्ट स्लाइड टीचर यस ड्राई क्लाइमेट जो जगह इक्वेटर के करीब होती है एज यू सी एज यू ऑल नो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था और लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था जो जगह इक्वेटर क्या होता है द मिडल ठीक है जो दरमियान का एरिया होता है हमारे हेमिस्फेयर का वी कॉल इट इक्वेटर जो जगह इक्वेटर के करीब होती है दैट इज ऑलवेज ड्राई हॉट वार्म ठीक है वो हमेशा जगह क्या रहती है हॉट रहती है और गर्म रहती है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ओके नाउ इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट के हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ है ठीक है स्टार्ट वेयरिंग वार्म क्लोथ्स हम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं इट मींस क्लाइमेट का हमारी लाइफ के ऊपर इस तरह का इफेक्ट है कि वो हमारा क्या करता है हैबिट्स वेयरिंग हैबिट्स कपड़े पहनने की हैबिट्स खाना खाने की हैबिट्स ठीक है और हमारी आउटडोर एक्टिविटीज यानी कि हमारी गेम्स जो हैं ठीक है उन पे भी इफेक्ट होता है क्लाइमेट का ठीक है फॉर एग्जांपल इफ द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड ठीक है यू कैन नॉट गो फॉर अ स्विमिंग अब क्लाइमेट अगर बहुत सर्द होगा आप स्विमिंग के लिए नहीं जा सकते आप ये गेम नहीं कर सकते आप ये स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते इस वजह से इसी तरह से हमारे क्लोथ्स के ऊपर भी इफेक्ट होता है राइट इन समर वी वेयर लाइट क्लोथ्स बिल्कुल हल्के से नॉर्मल से कपड़े पहनते हैं जो कि गर्मियों में पहनने वाले होते हैं ठीक है इसी तरह से सर्दियों के अंदर क्या होता है ठीक है सर्दियों के अंदर वी वेयर वार्म क्लोथ्स ताकि हमें सर्दी ना लगे वी वेयर स्वेटर्स ब्लेजर्स जर्सीज ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज इसी तरह से आउटडोर एक्टिविटीज देखें वार्म वेदर के अंदर समर के अंदर लोग बोटिंग करते हैं ठीक है इन वार्म क्लाइमेट पीपल कैन टेक पार्ट इन आउटडोर गेम्स इन वाटर स्पोर्ट्स ठीक है आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं स्विमिंग कर सकते हैं सर्फिंग कर सकते हैं मींस के समर के अंदर आप इस तरह के एक्टिविटीज इस तरह की गेम्स इस तरह की स्पोर्ट्स खेल सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नेक्स्ट स्लाइड ओके थैंक यू नाउ कैन यू सी अब यहाँ तक के स्नोमैन वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज भी जो हैं वो हम कहाँ पे कर सकते हैं वो हम इस तरह के एरियाज में कर सकते हैं जहाँ पे वेदर जो है वो कोल्ड होता है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज ईट टॉकिंग अबाउट द क्रॉप्स ठीक है अब जो क्रॉप्स जो हैं वो क्रॉप्स भी है वो जो डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेट के ऊपर हमारे वेदर के ऊपर किस तरह के क्लाइमेट के अंदर हम रह रहे हैं जिस तरह के क्लाइमेट के अंदर हम रहेंगे ठीक है हम जहाँ पे लाइफ स्पेंड करेंगे वहां पे उस क्लाइमेट के हिसाब से क्रॉप्स जो हैं वहां पे ग्रो होती हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रो इन अ माइल्डर क्लाइमेट, जहाँ पे ना ज्यादा गर्मी हो और ना ही ज्यादा सर्दी हो, वहां पे वी ग्रो राइस। ठीक है, ये देखें ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी अ राइस पैडी फील्ड। ये क्रॉप्स है, यानी कि एक खेत है जहाँ पे हमने राइस जो है, राइस की फील्ड है, वहां पे हमने राइस लगाए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नाउ द व्हीट, जिसे हम अनाज कहते हैं, जिससे हम फ्लोर यानी कि आटा आता है, जिससे हम अपना चपाती बनाते हैं, राइट। वो वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह के क्लाइमेट है। क्लाइमेट के अंदर इस तरह की जो क्या कहते हैं क्रॉप्स हैं वो ग्रो करती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह वीट भी है, ये आपके सामने स्क्रीन पे, वीट भी किस तरह के क्लाइमेट में ग्रो करती है, माइल्ड क्लाइमेट में, या लिटिल बिट वार्म। ठीक है, वो जहाँ पे ना ज्यादा सर्दी हो और ना ही ज्यादा गर्मी हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके चिल्ड्रन, यस्टरडे आई गेव यू सम वर्क। मैंने आपको ये एक ग्राफ ये सामने दिया गया है, जो फिगर दिया है, यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं जो मैंने आपको कल बताए थे कि नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, कि क्लाइमेट किस तरह का है। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वी टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, हमने अपनी अभी बात की क्लाइमेट, दुनिया के क्लाइमेट के बारे में, कि कई जगहों पे सर्द होता है, कहीं पे गर्म होता है। there are places where there is very hot, there are places where there are very very cold। ठीक है, क्लाइमेट फर्क होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, अब कुछ वो कहाँ पे जाके स्टार्ट होता है, कुछ एरिया में सर्दी होती है यानी कि इट्स कोल्ड, और कुछ एरिया वार्म। ठीक है, और ये फिगर्स हैं कुछ जहां से हम देख के हमें ये पता चलता है कि जैकबाबाद जो एक सिटी है, एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, ये कि देखें एनुअल 8 जून के अंदर जो वेदर है लाहौर में वो 33.9 होता है, सेंटीग्रेड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आपने सबने आई होप पढ़ा होगा। यस, ये वार्म क्लाइमेट का एक पिक्चर है कि यू कैन डू बोटिंग इन द वार्म क्लाइमेट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, नेक्स्ट। Next slide, please. Okay, now talking about the effects of greenhouse gases on climate, burning of fossil fuels. अब greenhouse effect क्या है? What is the greenhouse effect? Climate change के बाद greenhouse effects क्या है? Greenhouse gases allow sunlight. All of you, page number 10 से I'm doing the reading from page number 10. Page number 10. Greenhouse effect. Greenhouse gases allow sunlight to pass through the atmosphere and reach the Earth's surface. Some of the sunlight is captured as heat on Earth and some of it goes backwards space. This trapping of heat inside the atmosphere is called the greenhouse effect. When these gases are kept in the right amount, they trap just enough heat to keep the Earth warm for life to survive. Without greenhouse gases, the Earth would be very chilly with temperatures falling to minus 17 degrees centigrade. Okay, okay, listen now. The greenhouse gases. अब greenhouse gases क्या करती हैं? They allow the sunlight to pass through the atmosphere and reach the Earth's surface. अब what they do? ये क्या करती हैं greenhouse gases? ये sunlight के एटमॉस्फेयर के अंदर से पास होती हैं और अर्थ सरफेस के ऊपर आती हैं, यानी कि और फिर क्या करती हैं, सनलाइट एटमॉस्फेयर के अंदर से सनलाइट को कैप्चर कर लेती हैं। when they capture the sunlight, जब वो सनलाइट को कैप्चर करती हैं तो वो हीट
जो है अर्थ सरफेस के ऊपर ज्यादा होती जाती है. दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. द ट्रैपिंग ऑफ हीट इनसाइड द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स ना हो, अगर ये हीट को ट्रैप ना करे, तो हमारे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है दैट वुड रिमेन वेरी कोल्ड. यहाँ तक कि -17 सेंटीग्रेड जो है, ठीक है, वहां तक टेम्परेचर कोल्ड हो जाएगा. इस वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये हमारे जो क्लाइमेट है उसको क्या करती हैं, हीट करती हैं, हीट अप कर देती हैं, बिकॉज दे ट्रैप द हीट फ्रॉम द एटमोस्फेयर. ओके, इफेक्ट्स क्या हैं इस ग्रीन हाउस, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ऑन क्लाइमेट. अब जितनी अमाउंट में इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ऑन आवर क्लाइमेट, अब जितनी गैसेस, जितनी ज्यादा ये एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करेगी, उतना हमारा क्लाइमेट जो है क्या होगा, वार्म होगा. द मोर दे गोइंग टू एब्जॉर्ब, द मोर वार्मर गोइंग टू बी द क्लाइमेट. नाउ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, आपका पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये सारे क्या करते हैं, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड. और आप सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती है, ये क्लाइमेट को वार्म करती है. ठीक है, इसी तरह से जब आप गाड़ी के अंदर, अपने व्हीकल्स के अंदर पेट्रोलियम डलवाते हैं, या इंडस्ट्रीज के अंदर जब पेट्रोलियम के ऊपर काम होता है या कोल से काम होता है, यानी कि कोयला को जब जलाया जाता है, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. और जितनी भी ट्रांसपोर्ट्स हैं सब आपको पता है कि पेट्रोल के ऊपर चलती हैं. ऑल द व्हीकल्स दे रन ऑन द पेट्रोल. और जब पेट्रोल जलता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और उससे क्या होता है, हमारा क्लाइमेट जो है दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, इट्स गेटिंग वार्मर वार्मर एंड वार्मर डे बाय डे. दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है. ठीक है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज इंक्रीजिंग. कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो दिन ब दिन एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ज्यादा होती जा रही है, इंडस्ट्रीज की वजह से, मिल्स की वजह से, बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स, जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं जो हम चलाते हैं, कार्स, ट्रक्स, इस तरह की जितनी व्हीकल्स हैं. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट डिफॉरेस्टेशन. Another deforestation. I'm reading from page number 11. It's deforestation. Page number 11. It's deforestation. Okay. Another reason for the increase of carbon dioxide in the atmosphere is it releases oxygen in the air. This would not as many trees to do this for us. Carbon dioxide is getting added to the atmosphere and not being replaced with the oxygen. Next slide, please. Thank you. Okay. Now, deforestation. Another reason, एक और वजह, वो क्या है, किसकी, इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा होने की पहले आपको वजह बताई, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये चीजें जब चलती हैं, यानी कि हमारी गाड़ियों में जब पेट्रोल फिल होता है, ठीक है, फिर इंडस्ट्रीज के अंदर जब यूज होता है, तो दे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से जनरेट होती है. वो तो एक रीजन थी. द सेकंड रीजन इज डिफॉरेस्टेशन. अब इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या है, कटिंग ऑफ ट्रीज. दिन ब दिन जो ट्रीज को कट किया जा रहा है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, यू एज यू ऑल नो कि ट्रीज क्या करते हैं, दे absorb the carbon dioxide and gives oxygen to the climate, to the atmosphere, to the world. ठीक है, इस वजह से ट्रीज को क्या कहा जाता है, they act as lungs of the earth. कि अर्थ के ऊपर, अर्थ के वो क्या हैं, लंग्स हैं. ठीक है, because they give oxygen and absorb the carbon dioxide. अब deforestation से क्या हो रहा है, क्योंकि trees को कट करते जा रहे हैं, and because of that what's happening, कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं हो रही, क्योंकि ट्रीज कट डाउन हो गए, तो एब्जॉर्ब कौन करेगा, बिकॉज ट्रीज कट डाउन हो गए, इस वजह से ऑक्सीजन भी जनरेट नहीं हुई और कार्बन डाइऑक्साइड भी एब्जॉर्ब नहीं की गई. और बिकॉज ऑफ दैट क्लाइमेट के अंदर भी फिर दोबारा चेंज आता जा रहा है, और क्लाइमेट इज बिकमिंग हॉट एंड हॉट डे बाय डे. नाउ पेज नंबर 12.
अब हमें ये देखना है कि व्हाट आर द वेज, क्या वो तरीके हैं जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि रिड्यूस कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो इफेक्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर, राइट? बी एनर्जी, नंबर वन, बी एनर्जी एफिशिएंट, यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी। उससे क्या है कि हमें कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी किस तरह से प्रोड्यूस होती है? कोल को जलाने से, पेट्रोलियम को जलाने से, राइट? तो उससे क्या होता है, जब पेट्रोलियम जलाते हैं हम, कोल जलाते हैं, तो उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के से हम क्या करते हैं? बिजली बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। जब हम कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो फिर बिजली कम बनानी पड़ेगी, फिर कम बनानी पड़ेगी। इस वजह से क्या होगा? कोल का यूज और पेट्रोलियम का यूज कम होगा। इसी तरह से सेव वाटर बाय टर्निंग ऑफ टैप्स, ठीक है, हम वाटर के टैप्स को बंद रखें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं उनको हमेशा बंद रखें, यानी कि हमारे टेलीविजन हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, अगर आप यूज नहीं कर रहे तो टर्न देम ऑफ। प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो एब्जॉर्ब करे। इसी तरह से आप ज़्यादातर व्हीकल्स का यूज़ ना करें, बट ट्राई टू यूज़ द बाइसिकल, और या वॉक करें, जो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। इसी तरह क्लोथ्स जो हैं वो ड्रायर मशीन में ड्रायर से ड्राई करने के बजाय आप उन्हें सनलाइट में, यानी कि अंडर द सन ड्राई करें। इसी तरह से रिसाइकल पेपर, मेटल, ग्लास, इन सब की चीज़ें जो हैं वो रिसाइकल हों, ताकि हम दोबारा से उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। इसी तरह से डिटर्जेंट्स जो हैं, ठीक है, उनसे रिंसिंग, वॉश क्लोथ्स इन कोल्ड और वार्म नॉट हॉट वाटर, यूज द मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट्स फॉर वॉशिंग। डिटर्जेंट जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। बी वेयर ऑफ व्हाट हैपेंस टू योर रबिश, कीप स्टफ आउट ऑफ लैंडफिल साइट्स। Kitchen and garden waste can be composted or recycled. जितना भी आपके किचन का या गार्डन का जो चीज है उसके आप क्या करें? रिसाइकल करें। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द होमवर्क। ओके, वर्क पेज, I'm right. I'm writing it down for you in the chat. Work page, question number, it's A and B and D. That is the homework for you. I'm just going to give you a clue. मैं आपको एक छोटा सा clue दे दूं, ठीक है, और वो ये है कि वर्क पेज क्वेश्चन नंबर ए जो है वो कहता है स्टडी द टेबल ऑन पेज नंबर 9। पेज नंबर 9, टीचर कैन यू move to the previous slides? Yes, it's going to be this. Yes, yes, keep moving. Keep going, teacher. Yes, this one. Yes, this figure. Okay. Now, number 1. Work page, question number A. And question number 1. The place with the highest annual rainfall. ठीक है, वो जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। अगर आप इस फिगर में देखें तो you can see the highest rainfall is in city of Murray. Okay, very good. Someone have answered in the chat. It's Murray. Murray में सबसे ज्यादा क्या होता है? रेनफॉल होती है। Same like this, we're going to answer all the blanks now. Okay, now I'm going to give you uh, another homework for chapter number 3. It's going to be the chapter number 3. You have to do the reading of chapter number 3. It's page number 15, 16, 17 and 18. You have to do the reading. As you all know that we have only 3 classes of social studies in a week. Okay, so you have plenty of time to do your homework and to do the reading. I mean the chapter, the next chapter's reading. Okay, so next week we're going to join on Monday. Okay,
I hope you're all going to do the homework. Okay, and let me tell you again. Let me explain you the work page. The work page question number D, which is the filling the blanks. Let me give you an idea about that, just like I did in question number A. Let me give you a little idea about question number D as well. Filling the blanks. Without greenhouse gases, the Earth would be very dash with temperatures falling to -17 centigrade. Okay, अगर तो greenhouse gases ना हो, तो Earth का temperature, as I told you before, क्या होगा? बहुत cold हो जाएगा. Okay, the Earth would be very cold with temperatures falling to -17 degrees centigrade. Yes, very good. Menahil Noman, you have answered. It's going to be very chilly. It's going to be very cold. Okay, very good. And now filling the blank number 2 is the use of dash fuels increase the amount of greenhouse gases in the atmosphere. अब क्या होगा? The use of dash fuel increases the amount of greenhouse gases in the atmosphere. किसका यूज की वजह, कौन से फ्यूल की यूज की वजह से क्या होगा? ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी और हीट ज्यादा हो जाएगी. द यूज ऑफ fossil the use of fossil fuels. The answer is fossil fuels. Very good, very good, very good, very good, very good. Okay, I'm again going to tell you about the homework. I'm going to write it down in the chat. Make sure all of you note it, all of you. Okay, let me write that again. The homework